एक बार वो लाइव हो जाएगा, then I will repeat what was we are saying. अच्छा, एक बार वो लाइव हो जाएगा, I will repeat what was we are saying. Okay, ये भी लाइव में आ गया. चलो ठीक है. So now we are in both places. Basically we are in YouTube also. ये भी लाइव में आ गया. And ठीक है. The meeting being live streamed. Got it. चलो ठीक है. So welcome everyone. It's a first time experimental initiative from Kiat and Design. We are here actually with a few students. We are expecting few more students in a few minutes, 10-15 minutes. Also, this stream is live on YouTube. So people can from YouTube actually watch this live, and they can keep watching later on after the stream ends, because it will be there on a public domain for all time. Now the thing is that why we are doing this, because when still I still feel that the design education is not very well known and very well accepted या appreciated in India. Parents are not very sure कि क्या होता है, कैसे होता है, पीछे कैसे काम चलते हैं, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा. This is a main question, and ROI is one of the main question which I used to get from the parents and students के एक्सपेंसिव है जब वो लोग नॉर्मल कोर्स के से कंपेयर करते हैं, बहुत सारे नॉर्मल कोर्स से कंपेयर करते हैं, एंड उसके बाद जॉब क्या मिलेगा, सैलरी क्या होता है, प्लेसमेंट की गारंटी क्या है, ये सब चीजें क्वेश्चन होती है. एंड ऑल्सो ये मेरे दिमाग में ये सब बातें इसलिए आया बिकॉज मैंने जब भी कॉलेज रिव्यू किया है, मैंने कुछ ही कॉलेज को देखा जो कॉलेज बहुत ढंग से काम कर रहे हैं. एलपीयू वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज अमंग प्राइवेट कॉलेजेस, दो जिनका मैंने इतने डेडिकेशन देखा है, स्पेशली रजत जी एंड ऑल. फिर फिरोज जिस तरह से काम करते हैं, फिर मिस्टर मित्रा तो ऑब्वियसली ही इज इन इज द मेन अम्ब्रेला, बाकी सब उसके अंदर में ही है. अब बात यह है कि दिस मैसेज आई वांट टू ब्रिंग टू स्टूडेंट कि आप लोग बताओगे आपके डायरेक्टली के प्लेसमेंट के बारे में, फिरोज टीचिंग पेडागोजी के बारे में, मिस्टर प्रोफेसर मित्रा ने जो भी शेयर करना चाहता है स्टूडेंट के साथ, इनके बारे में, सो दैट जो लोग आगे भी ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आए कि कॉलेज किस तरह से क्या रोल प्ले करता है एक बच्चे के लाइफ में, जो यहाँ पे जाके एक गुड अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बेसिस पे उन लोगों की आगे लाइफ, करियर, फैमिली सब कुछ मेंटेन होगा. सो ओवर टू यू sir. We can start with Mr. Mitra. Any message from Dean, basically? Thank you so much, Mr. Basu, because this has been one of the exceptional platform that you have created for LPU Fashion Department to have all the open answers to students who are having so much of queries. Presently, what is happening? LP is not into marketing and all, so people would definitely like to understand that what is going on inside this huge university. And this is one of the biggest university, one campus with more than 640 acres of land and an infrastructure with more than 200 programs that we are running. So I think in the market, everyone has that curiosity that what is happening in fashion. And not only in fashion, there are so many design disciplines that we have. So thank you so much. Thank you so much for inviting us. And thank you so much all the participants, the students who has shown interest to be a part of LPU family. We welcome all of you. And if you have got any queries, please do let us know. We can have one-to-one discussions in this forum. Thank you so much. Thank you, sir, for the kind words. And मैंने जो भी यहाँ पे सर्वे किया था स्टूडेंट से, तो एक मेजर क्वेश्चन था अबाउट द प्लेसमेंट. मैं स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू फील फ्री टू आस्क. चैट में भी लिख सकते हो अगर बोलने में प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. एंड इवेंचुअली वी विल चेक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल्सो कि वहाँ पे कोई क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं. सो ओवर टू रजत जी, आप थोड़ा सा एलपीयू का जो प्लेसमेंट के लिए मैं आपको इतना भागादौड़ी करते हुए देखा है जब मैं एलपीयू में था, तो आप थोड़ी सी प्लेसमेंट को लेके यहाँ पे कुछ शेयर कीजिए डायरेक्टली फ्रॉम यू. गुड.
Absolutely. Thank you again, Bashu Babu, for again organizing this wonderful platform. And also, you are giving a very good chance for all the students to normally come up directly with our school, our university, to get first-hand information, which is extremely good. And as you will all see, dear students, that we are extremely close to all of our students, the way we take them through the 4-year sessions, the way we work closely with them. We have an excellent batch of faculty members who work very closely with them. Our recent fashion show is proof in the pudding, like we say. And to tell you what uh, is one of our main fortes is that placements is something that we are very, very proud of. Today, we work with almost 100 different companies, not only in India, but in the neighboring countries, in Bangladesh, in Indonesia, in Malaysia, and also the Middle East. And we are proud to say that all the students that have been placed are doing extremely well. We do it all in stages. From the very first and second year, we ensure that we start sending out our students for their internship program. So even if you have a 2-month gap, for instance, now, June and July, our students are not, they have not gone home. They are not staying at the hostel. They have all been engaged in the industry and are doing a quick 6 to 8 week program so that they are not wasting time. They are already learning hands on, which is very, very important for the industry. What happens? This also gives us a chance for our students to come into close contact in the industry, and all the classroom learning, they learn in proper perspective when they go into the industry, be it in manufacturing, be it in design, or be it in marketing and customer relations management when they are working with brands in the domestic retail brands. So what we ensure is that we have a very close connection with the entire industry. We keep profiling all our students. We ask them, we sit with them, we counsel them as to what they are looking for. At the end of the session, in 3 or 4 years, what do they want to do? And even for our third year and fourth year students, when they are in the final stage, when they go for a 4 to 6 month internship, which is their final internship program, we ensure that they are very, very clear as to what they are expected to do and what we expect them to go and how they should perform in the industry. So this gives us an ample opportunity to be able to place our students, like we always say in management, right time, right place, right price. So therefore, our students are very lucky that we come up with good packages for them, great companies to work for, and bright future ahead. Don't forget today that the Indian manufacturing and export market is booming. It's at $16 billion, whereas the retail market is at, just the apparel market itself is $356 billion, which means a lot. And over the next few years, I say you are going to be the most luckiest ones, because every brand in the world wants to come. Is the biggest playground for every brand existing in the world. And that is something which augurs well for us. We constantly upgrade our courses. We constantly are working with our faculty members and the industry. And all the courses that we run here are normally endorsed by the industry, so that they also know that they will get the product from us, which is you students, will be able to cope up with whatever is happening in the industry. So I think that is something unique in what we do. And we have a wonderful leader in our dean who is a very, very far-sighted gentleman who constantly is taking us and advising us on what we should and how we should progress. And the students are always interacting
with every member over here. So it's a very, very different kind of a culture that we inculcate in our students. So, Bashudha, over to you. Maybe Firoz sir or Bhatkar sir would now like to add some more. I was muted. So I would love that आप लोग सब जब यहाँ पे है, जो भी पेरेंट्स लोग हैं, स्पेशली पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक चीज ये फिर उसको भी रिक्वेस्ट करूंगा ये समझाने के लिए, जब लोग फैशन सीखने जाते हैं, अभी भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है, इवन बच्चे के अंदर क्लैरिटी नहीं है फैशन सीखने जाने का क्या मतलब है। एंड जब जॉब भी ढूंढ रहे, जो आपके पास भी आएगा कि एरिया क्या है जॉब ढूंढने, जॉब मिलने का। एंड टू प्रोफेसर मित्रा, ये क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जब लोग हायर स्टडीज का भी सोचते हैं यहाँ पे करने के बाद, उस पे आगे चल के क्या प्रोसेस होता है। सो आई जस्ट वांट कि पीपल इसको एक ना एडुकेशन की तरह समझे। इट्स जस्ट नॉट अ पैशन या शौक है। बहुत टाइम में बच्चे बोलते हैं मुझे सजना अच्छा लगता है, मैं फैशन डिजाइनिंग करने आ गया हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ डेडिकेटेड वर्क जिसे बहुत काम करना पड़ता है। तो सीखने का जो पार्ट है, फिरोज कैन से, फिरोज स्माइल कर रहा हो तो फिरोज भी ऐसे चीजें फेस किया होगा शायद। लोग बहुत टाइम पे ऐसे करते हैं क्योंकि फैशन डिजाइनिंग इतने पॉपुलर हो गए कि मैं आगे, पहले लोग आर्टिस्ट बनने जाते थे, फैशन डिजाइनर बनने चले गए। बट जो एक्चुअल वर्क है इसमें, एक डिजाइनर बनने के पीछे जो जर्नी है, एंड जॉब एंड हायर एजुकेशन, ये आप लोग थोड़ा सा इसमें गाइड कर सकते हैं या बोल सकते हैं, सो पीपल विल अंडरस्टैंड मास्टली। Absolutely. Should I? Yes. So, good evening, everyone. It's wonderful to be here, and as Bhaskar sir and Rajas sir has enlightened us what is it. So let me just give you a brief about how we started, as when relatively have less experience than Rajas sir and Bhaskar sir. But I still remember that when I started my designing career, so my parents were very skeptical. What is this field has to offer to a kid, right? And eventually I happened to get into NIFT, and I was fortunate enough to work with good names in the industry. So it was wonderful experience for me as a creative journey. But yes, I also understand that a lot of parents especially are very skeptical. What our students, what our kids are going to do in this particular course. So let me just tell you, it's a very passion driven, skill oriented course. You need to be passionate about design. You need to be passionate about how to make beautiful things, how to create beautiful things. And it's also a very skillful design. So now when we talk about skill here, so passion is something that you're born with, or you inculcate in you as a lifestyle. But skills is something that you need to learn every single day. And fashion is not just about kapda, it's not just about clothes, it's not just about few little things. It's an absolute amalgamation of a lot of skills put together. The way you think, the way you perceive design, the way you learn design, from sketches to getting the right fabric, to getting it dyed in the right colors, to get it done, to cut it in the right way, and then to stitch it and then market it. Okay, so this absolute amalgamation of various skills really lead to a successful fashion designer. There are so many good examples for that. A very popular brand, there are very popular brand like Tarun Talyani, you have Rahul Mishra, you have Sabyasachi Mukherjee. They all started small, but over a period of time, how they really build up into the empire they are, their legacies now, right? From parents' point of view, I would say design, when you come to learn design, we as faculties, as teachers who are giving you the design knowledge, we don't only teach you clothes. We teach you a lifestyle where you start thinking creative. You by the end of your course, you can create bags, you can create accessories, you can design building. That's the beauty of fashion design program in particular. Because when you I'm going to give you an example of JJ Valaya. He's a legacy in itself, right? Sabyasachi Mukherjee, he's a legacy now, right? So what you see is they are not just doing garments now. What they are also doing is they're entering into jewelry, they are entering into accessories, they're into getting into interior, they are getting into decorating and planning weddings, right? So what happens is what we are teaching you is to develop a taste.
which is very, very important. You need to do everything that you in your life tastefully, and that's how you become a creative person. So parents don't really have to worry that they will land up becoming masters or tailors or that's the basic philosophy that get into parents mind ki tailor banega, right? Tailor banna hai, right? So a lot of people, I have heard it myself, so I can really say that people do talk like that. But it's about creative lifestyle. You have to think beautifully, make beautiful things, and then present that beautiful things in a very beautiful manner to the world. So this is what we are teaching at LPU. We are teaching at various design oriented courses. So yeah, so their parents don't really have to worry that they are only getting we are only making fashion designers. We are working on making students as fashion stylists. They work in magazines, they do fashion shoots, they work in fashion shows. We are working with style managers, where they work with luxury product luxury brands, where they tell people what to wear, how to wear, and when to wear, right? So we are training them for that. We are training people to do a communication. Fashion communication is very, very big and challenging course, where we tell people how to write beautiful things about beautiful products. So this is something that we also inculcate in our students from when they enter this course. What we also teach is how to create an ambience where people can come together and work. For example, when what we train student also is in technical courses like pattern making, garment construction, where they can really lead into an export house, where they can plan the production, they can plan the sample. We are also teaching student merchandising, which is how to do bulk orders, how to create bulk orders, how to maintain their buyers and account. So it's not just a one arena that we touch. We actually touch a lot of fields, and it is up to the student. And in fact, we are at the verge of reviving our curriculum, where we are focusing on how to inculcate very, very specific skills to the students, for which they can get high paid jobs. So that's something that we all have in mind. Placement is very, very I like to believe that placement is very, very subjective when it comes to design courses, because if you are good at designing, if you are good at what you want in life, I don't think, I'm sure Rajasthan will agree with me, that we don't have to ever worry about placement. It's something that will automatically come to you. It's not a very, very big industry. If you're good at something, people will find you, work will find you, believe me on that. And I say it with a lot of passion and a lot of commitment that I've seen in my life. I've seen people, people walk into people's life, and they see how you work, they will hire you. I usually give this example: if you're earning 15 lakhs a month for a client or a buyer, why are they not going to pay you 2 lakh or 1.5 lakh per month? Why? That's obvious. So so placement is something that you don't have to worry if you're skillful. But 1 lakh 1.2, it's how long journey is this? Because अगर NIP से भी निकलते हैं तो इतने से start तो होते नहीं है general. Absolutely, sir. It is very important to understand that academic is very different from what they learn, what they are supposed to do in industry, right? That's the reason, one of the big reason, that's why we promote industry exposure, extremely important. And someone like Rajas sir, who has years of industry exposure, he has run companies, he has worked with big brand, is associated with us, so that people, we can send our student to the industry, so they start learning how to do things from the very beginning, right? So it's a journey. It's not a destination. It's always a journey. You need to really travel every single day. If people come and say, okay, mujhe 1 lakh ki job mil jayegi, it's not going to happen until and unless you exhibit that skill, you exhibit that talent. And believe me, if you have that talent, if you have that Rajas sir usually say, if you have that fire in your belly, why not, you will eventually reach there, and people will talk about you, people will talk about how you work, people will talk about your design sensibilities, how you perceive design. And believe me, skies are the limit. I totally believe in that. And one thing, Firoz, from your words only, I will ask, because जब अपने बोल रहे हो ना कि till the student is showing the talent and the skill,
प्लीज एक्सप्लेन द स्किल एंड टैलेंट। मैं बच्चों को यह समझाने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग ओनली, स्किल एंड टैलेंट फ्रॉम अ प्रोफेसर पॉइंट ऑफ व्यू। लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जिस यूनिवर्सिटी जहाँ पे इतना बड़ा एक फैशन डिपार्टमेंट है, यू आर टीचिंग देयर। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किल एंड टैलेंट किसको आप बोलोगे, who will do well in the college also? और आपको कौन से बच्चे को देख के लगता है कि ये बच्चा जिंदगी में आगे चल के वो सब्यसाची या तरुण टैलेंट जो भी नाम बोल रहे हो उनके प्लेस में, उनके फुटस्टेप में जा सकता है? तो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग यू विल लुक फॉर इन अ स्टूडेंट? Okay, let's talk about skills first. What are skills? Skills is small things that you do in your life to achieve a bigger goal, right? For example, there is this really interesting book about Ikai, if I'm not wrong, Ikai, where they tell you about how you do small things in life and how it really builds up your character, right? So skill in design is something very, very similar. In that book, there was this line where you say that you need to make your own bed every single day. Why was it said that? So that you inculcate those kind of a character in yourself, right? So when we talk of when I say skill, what are skills? Skills are basically doing small little things and then build up your lifestyle, build up your stamina to work into making bigger things once you even graduate. For example, if you are doing fashion design, let's say you entered in a program which is fashion design, and you have an extra fabric lying at your place, make a pouch out of it, right? So what you're doing is you are building up a skill not just associated with the money that you're paying for or the skill that you came for in college, but you're also inculcating other skills. Now the situation is very, very different from when we started. When I started, people come to the university to pick up a specific talent. Like for example, they come to fashion department to pick up fashion designer. People used to walk into accessory design to pick up accessory design. Now the situation has gone a lot more vast. People doing fashion design who've completed their studies as fashion designer are no more doing fashion designing because they have inculcated the skill of a fashion stylist. What does a fashion stylist do is pick up things from here and there and compile them tastefully according to the client, right? So what we are talking about by doing small things in life, do not leave one day in your life to learn a thing. You need to learn different skills every single day, whether to pick up a spoon or whether to learn a single interesting word or looking at an interview, getting inspired. These are skills that you need to inculcate. And then by the end of it, what you have to do by the end of the day, you need to put them together as a lifestyle and see what you want to achieve. So for example, I've learned a bit of stitching today. I've learned a bit of how to use a specific machine today. So what are these? These are skills, right? So one small skill combined together, you will lead to a creative person, right? If you think, and I remember I've given this example to a lot of people. I happen to know one person extremely creative, but his creativity used to come only once in a year, right? It used to knock at the door only once in a year. So what happened was, but extremely talented. He's doing that person is doing extremely well in his career now. But the point is, those small skills that I did as in my career, I used to be very, very inquisitive. Still today, I keep on doing small little projects, which I advocate to my student apart from the curriculum. They should be doing. So those skills really add up to your creativity. So skill is very, very important, whether it's speaking skills, communication skills, finding the right images is also a skill. You need to train yourself. You need to train your mind to think in a particular way, right? And that training is a training. It's not, as I said, it's not a destination. It's a journey. So skill has to be developed, adapted and executed every single day. So very, very important. Now the second point was, Basu sir, what was the second point? Skill and talent. Yeah, talent is can be inbuilt, right? But talent, if you don't utilize the talent, if it's just lying with you and you're not doing anything about it, it's of no use. Believe me, I say it from my heart, it is of absolutely no use. If you're a talented speaker, please tell other people, enlighten other people. If you're a talented designer, please show your work to the world, right? And how are you going to
show that word? By those skills that you've acquired. You have to put those skills together, get your work together, and then show it, right? If you're a talented speaker, please improve your vocabulary. It's not possible कि आपको सब कुछ आता है. Today I was telling Rajesh sir a word that I learned yesterday, and this is just few hours back, you know. So this is how you learn things. Okay, so skill is an ongoing process. Talent, you might be born with it, but it is skill will improve your talent. It will make you a better person, better individual, better designer. So indirectly, you have given a nice piece of advice. Basically, we all should have a notebook of daily learnings. Absolutely. And, no second thought about it. No second thought about now, it. we have got some very important questions in Zoom and also in YouTube. पहले Zoom में जो question आया है, मैं ये पूछता हूँ, student ने पूछा है कि student के language में quote, actually I heard B fashion में without tuition fees बहुत सारे extra money लगता है for fashion show, materials and others. Please tell me about this. So आप लोग जानते ही होंगे, तो give them an idea कि fees के अलावा और 4 साल में areas of cost एक fashion show अगर hold करता है. So Rajesh sir, would you like to say, or Bhaskar sir, you would like to say, or should I enlighten this question? So fees, definitely we can share our point of views, Firoz. So I would like to suggest students that when you come to fashion is something which is beyond your basic necessity. Correct? So हम लोग बोलते हैं ना 3 basic necessities हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. So fashion is not just to cover your body now. It is beyond that. So जब आप कोई beyond imaginations और आपका creative को आप shape देना चाहते हो, definitely you have to invest some sort of money, right? अगर आप अच्छे होटल में खाना खाने जाते हो, उसके लिए पैसा तो देना ही पड़ता है ना. So it is not about money or how much you have to spend. It's all about you have to give shape to your creative ideas. अब मान लो अगर मैं एक घर बना रहा हूं, तो घर में बहुत सारे सीमेंट लगते हैं. सीमेंट में डुप्लीकेसी भी होता है. आपको घर कैसे बनाना है, अच्छा घर बनाना है, तो उसके लिए अच्छे माल लगाना बहुत जरूरी है. और अगर आपको कमजोर घर बनाना है, वो मिट्टी से भी बन सकता है. Now it depends on you what kind of products you would like to make. तो आज का डेट में मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, हर किसी का डिमांड अलग अलग है. करेक्ट? सो देयर आर वेरियस मार्केट्स, वेरियस क्लाइंट प्रोफाइल्स, वेरियस प्रोडक्ट्स. आपको ये देखना है कि आपको किसके लिए बनाना है. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग. अगर आपको अच्छे कस्टमर्स या जो पैसा देने वाले हैं उनके लिए बना रहे हो, देन यू हैव टू इन्वेस्ट मोर. अगर आपको होलसेल रेट और मीडियम, आपका मिड सेगमेंट से नीचे लोगों के लिए बनाना है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मटेरियल यू इन्वेस्ट, which market you cater, what kind of client profile you are focusing on, and what is their repayment, what is their pocket, how much their pocket is allowing you to get money from them. Correct? So this is the basic understanding of seeing fashion overall market. Now you have to decide whether you would like to go for, there are various markets. अगर कोई दिल्ली से है, चांदनी चौक एक मार्केट है, सरोजनी नगर एक मार्केट है, नेहरू प्लेस एक मार्केट है, और वसंत कुंज एक मार्केट है, साउथ एक्स एक मार्केट है. सबके सारे मार्केट्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं. अगर बॉम्बे में भी जाते हो तो भिंडी मार्केट एक अलग मार्केट है, ठीक है, अंधेरी अलग मार्केट है, लक्ष्मी नगर अलग मार्केट है. सो देयर आर वेरियस मार्केट्स. इफ यू सी द ग्लोबल मार्केट, इफ यू कंपेयर विद यूरोप एंड यूएसए, देयर आर सेपरेट मार्केट्स. करेंसी अलग अलग है, लोगों के टेस्ट अलग हैं. So now, once you step inside the fashion world, then that area has to be understood. तो बच्चे को अगर ये क्लैरिटी होता है कि मुझे कौन सा एरिया के लिए काम करना है, then definitely based on that you have to start investing money on it, because you're going to get it return, right? But normally fashion design ऐसा एक कोर्स है कि आपको इन्वेस्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, because you're talking about tangible products बनाना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है. So once you develop your products, definitely based on that, the industry is going to appreciate. क्योंकि जो products बनाते हो, industry उसी basis में ही आपको नौकरी देंगे. And what is the design philosophy behind your making of a product? So that is a process-driven work. But definitely we would only focus on the products that you have come out with.
Anyway, so there can be a long debate, long discussions, because everyone might be having their own perception of investment kitna hota hai. But basic, I like to add a very important point, student, that investment आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट तो होगी ही होगी. अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, and you need a good system to work on, right? So it's going to cost you more than 1.5 lakhs, right? So it is investment. It's monetary investment is one thing that a lot of people are worried about. Psychological investment, personal investment. There's a lot of investment that goes. I agree that fashion is a field where you need to invest to get the quality product. Okay, so it is very important that you make up your mind whether you want to invest that amount of energy along with finances in it. But investment is there in every field. अगर आप एक computer science and engineering का करने जाते हैं, अगर आप एक if you're going to buy a good system, and I'm sure so it's not going to cost you less than 1.5 lakh, right? So investment तो होती ही रहेगी, investment तो आपको करनी ही होगी, then only you will start getting the return. आजकल तो आपको personal enhancement पे इतनी investment करनी पड़ती है. You need to dress up well for offices. You need to do a lot of things, invest on yourself. You have to do various courses. So investment is a lifelong process. But yes, as Bhaskar sir said that returns are going to be good. You need to be passionate about it. नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ कि ये तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात आ रहा है, बट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है कि मान के चलो मैं पहले यूट्यूब के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, फिर इस पे वापस आना आसान होगा. कि काफी लोगों ने पूछा है व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ एलपीयू. सो तो वो अगर हम लोग बोले तो वो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा कि एलपीयू में इतना फी स्ट्रक्चर हो रहा है. फीस में हम लोग ट्यूशन फीस एंड सारे, उसके बाद हॉस्टल्स आता है. ये दो खर्चा करने के बाद और एक कैपिटल लगता है जो लोग रियलाइज नहीं करते हैं. इवन निफ्ट के लिए भी सेम प्रॉब्लम होता है. निफ्ट में जाने के बाद रियलाइज करते हैं कि वो कपड़ा रेगुलर खरीदना, वो सारे चीजें रेगुलर स्टेशनरी, ये जो चीजें है ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. बट ये मैं भी अपने तरफ से स्टूडेंट को बोलूंगा, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में लगता है, इफ यू वांट टू बिकम अ स्कल्पचर, जाके स्टोन एंड वुड्स खुद को ही खरीदना पड़ता है. नो सेकंड थॉट अबाउट इट, खरीदना पड़ेगा, वो है. बट उसका जनरल कोई आप दो चीज है, एक तो फी स्ट्रक्चर सब पूछ रहे हैं तो एक बार वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. एंड सेकंड, कैन यू गिव मी एनी आइडिया कि एक साल में पढ़ने के लिए जो लोग इंटेली स्टेशनरी तो चलो समझ में आता है, कपड़ा वगैरह बाकी सब चीज खरीदता है, एक मोटा मोटा कितना खर्चा है? ऐसा कोई हिसाब कुछ है, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग? Basu sir, I'd like to tell you the fee structure first, and then we can discuss the things later. So the fee structure जो हमारे programs की इस वक्त है वो 1,20,000 per semester है. लेकिन हम बहुत अच्छी scholarships देते हैं students को regarding कि आपके 10th में मार्क्स कितने थे, 12th में मार्क्स कितने थे, और आपका जो एलपी नेस्ट का एग्जाम जो होता है उसके बेसिस पर जो भी आपको जो रियायतें और स्कॉलरशिप जो मिलती हैं वो कितने, इन 3 के बेसिस पर देते हैं. ठीक है. बहुत अच्छी बात इसमें ये है दैट व्हाटएवर स्कॉलरशिप वी डिसाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके, जैसे हमने बोला आपको 50% स्कॉलरशिप मिल गई है, तो 50% स्कॉलरशिप आपकी वो उस सेमेस्टर के लिए नहीं होती है, वो पूरे एंटायर प्रोग्राम के लिए वो सेमेस्टर फी होती है. ठीक है. एक मिनट फिरोज, मैं ये चीज को थोड़ा हाईलाइट करूंगा. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की जो स्कॉलरशिप होती है वो सीजीपी के ऊपर डिपेंडेंट होता है. देन पीपल विल अंडरस्टैंड कि स्कॉलरशिप पूरा टाइम रहता नहीं है, वो हट जाता है. बट इन एलपीयू एक बार स्कॉलरशिप डिसाइडेड हो गया तो देन दैट स्टैंड विद द स्टूडेंट एंटायर 4 years. Yes, absolutely. वो 4 ईयर के लिए चलता है वो स्कॉलरशिप. 50% हमने कमिट किया तो 1,20,000 का आपका 50% 60,000 होता है. तो 60,000 आपका पूरे 4 साल के लिए रहेगा वो. ठीक है. पर सेमेस्टर यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट, अनटिल अनलेस अगर आप फेल हो जाते हो, साल नहीं लगता, उसकी अलग थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है. बट आइडियली ऑब्वियसली वी वुड प्रमोट द स्टूडेंट 4 साल में वो पास होके ग्रेजुएट होके निकल जाए. सो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एंड विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. सो जैसे मैंने आपको बताया 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स एंड आपका एलपी नेस्ट में जो भी आपका बेहतर होगा, these are 3 basic parameters that we have for deciding the scholarship, right? So अब इन 3 पैरामीटर में जो भी सबसे अच्छा होगा, लेट्स से आपके 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन आपने एलपीयू नेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, you performed really exceptionally well and you got 10th 12th के हिसाब से आपको लेट्स से 20% 30% स्कॉलरशिप मिल रही थी, लेकिन एलपीयू नेस्ट के हिसाब से आपको 50% स्कॉलरशिप मिली. तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट 50%. सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट? सो यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड कि आपके 10th 12th में मार्क्स कम थे तो आपका स्कॉलरशिप
ये particular रहेगा. You don't have to worry. Prepare well for the LPU Nest and you will be getting that particular scholarship. तो ये तो बात होगी scholarship की. I hope I answered one part of your question. Yeah. So the second part, which is about the expenditure that you have. Okay, if you see the curriculum that we have in the university, so it is divided into four particular. I'm talking particularly about B design, which is the most popular course that we have. It's a 4-year program wherein we have first year we have a foundation program where we inculcate few basic design skills to our student, where we teach them basic sketching skills. We ask them to ask the student to work on different material. ये हम छोटी छोटी skills inculcate करते हैं शुरुआत से student के अंदर, so that which is very similar to what NIF does. छोटी छोटी ये स्किल्स इनकलकेट करते हैं ताकि वो तैयार हो जाएं बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो हम सेकंड ईयर में शुरू करते हैं, सेकंड ईयर से रादर शुरू करते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर का जो करिकुलम, इट्स यू विल बी स्पेंडिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑन स्टेशनरी एंड मटेरियल procurement. So अगर आप रफली आप लेके चलें, if I tell you in an year, so that should be somewhere around 50 to 60,000 in the first year. And if you want to do bigger projects, so you can really take a bigger project. So I would highly recommend that. I'm going to give you a very classic example, Basu sir. So इस साल हमारी एक student है जो graduate हुई है, and she was very tight on her budget while doing her design collection. And I'm sure you were there for the fashion show. You must have seen the collection. It was wonderfully done, right? So she was very tight on the budget, and I was mentoring her, and she actually came and said, there's and after COVID there were problems with every household, right? So the student came and they said, sir, we are it's very difficult for us. And very skillful girl, extremely skillful girl, बहुत अच्छा पैटर्न मेकिंग स्टिचिंग कर लेती थी, बड़ा फिनेस था उसके हाथ में. सो वी calmed her down and said, okay, let's just figure out a way. डिजाइन का ना एक ब्यूटी ये है कि आप अपनी स्किल से किसी भी एक आम चीज को बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतर बना सकते हैं. स्किल का जो वो है ना, जो आउटकम है बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट? अगर आप स्किलफुल हो, आप एक पत्ते को भी आप बहुत अच्छी चीज बना सकते हैं, राइट? तो उस लड़की ने शी बॉट वेरी नॉर्मल फैब्रिक, मार्केट से वो नॉर्मल फैब्रिक ले आई, एंड शी सेड, सर दिस इज समथिंग दैट वी कैन अफोर्ड, राइट? सो व्हाट शी डिड, व्हाट ऑन विद हर स्किल्स, शी डेवलप्ड द टेक्सचर, she developed pattern herself, she stitched it herself, and the outcome was, Basu sir, I can't even tell you, everyone loved her outcome. Okay, so this is what we also teach as a subject, which is called problem solving skills, right? So jahan par aapke paas ek problem hai, how do you design your problem solving skills, how you come out of that problem skill. और आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाएं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाएं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और हर दफा आपके पास बजट नहीं होता है हर चीज को क्रॉस करने के लिए. आप ऐसे नहीं करोगे कि ये पैसे लो एंड गेट आउट, राइट? यू डोंट डू दैट. यू नीड टू डिजाइन योरसेल्फ, यू नीड टू डिजाइन योर सिचुएशन, यू नीड टू प्लान इट अ वे where you come out successfully. And this is the beauty of design course. You can do small things with small budgets, you can make big things. I read this quote somewhere which said that there are people who can make big things small, people who can make small things big. So it depends on the person who is taking it, right? So it is a very important lesson that I've learned in my life from that particular girl, that you have the will, you have the jazba, you have the skill, you can do wonders. So I won't really say that you have to bother ki bhaiya mujhe itna chahiye, but yes, you need a certain amount to survive successfully. But yes, if you are passionate about something, no one is going to there to stop मतलब अभी with this example actually जो डेन सर के और आपके जो बात के बीच में जो डॉट कनेक्ट हो रहा है वो ये है कि जो भी असाइनमेंट्स होता है उसमें बच्चे के ऊपर होता है को कितना खर्चा वो कर रहा है उसका ऑन द क्लॉथ एंड अदर थिंग्स, क्योंकि लैपटॉप वगैरह कैमरा ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, बट रेगुलर मटेरियल दे नीड टू बाय. सी वही वाली बात है, आपने 1.5 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिए, राइट? इफ आई एम सेइंग 50,000, आपने एक 50,000 लेट्स से पर नॉट पर सेमेस्टर बट ऑलमोस्ट लाइक एन ईयर आप लेके चले 70,000, तो आपके 2 साल तो निकल गए ना उसमें. हाँ,
you are already gone, right? But अगर आप yeah. one fashion student doesn't require laptops and all in LPU. You have No, we do have. We recommend that the students should have, but we have full-fledged computer labs. Yeah, so where we have Mac labs where the student can work on heavy software. We have a regular computer labs where they can work on Photoshop, Illustrator, and we provide all the facilities. Rajasthan, I'm sure you want to say something here. हाँ, तो और ऐसे भी है जो अपना कलीग फिरोज सर ने जो बताया बच्चे लोग को, जो ऐसा ही नहीं है जो खर्चा कोई जबरदस्त खर्चा हर वक्त करना पड़े। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ता है या मेडिकल लाइन में जाता है या ऑटोमोबाइल लाइन में जाता है, वहां पे भी इतना ही खर्चा हो ही जाता है, जो अलग अलग चीज और सामान के लिए उनकी जब प्रोजेक्ट्स होती है तब पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है जो एक ही साथ हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है जब डिजाइन कलेक्शन बनती है तब जाके, तो फोर्थ ईयर में, सेमेस्टर, which is almost at the fourth year. हाँ, हर सेमेस्टर पे तो उस हिसाब से नहीं लगती है। और जो पैसा लगती है रेगुलर के लिए, थोड़ा सा मार्किन कपड़ा खरीदे या थोड़ा सा सस्ता कपड़ा खरीदे जिसमें टीचर लोग उनको पैटर्न सिखा दे, या कुछ वो पैटर्न के लिए थोड़ा बहुत कागज खरीदना पड़े, ये इतना कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। बासु सर, एक और चीज हमने जो स्टूडेंट के साथ की थी इस बारी, जब ये लोग कोविड के वक्त घर गए थे, तो वी रिकमेंडेड हर शहर में, हर छोटे शहर में एक हमेशा से एक मार्केट होती है जहां पर सस्ता कपड़ा मिल जाता है। हम यूजली हम प्रमोट नहीं करते कि हम बहुत ही उम्दा कपड़े में चीजें बनाएं। इनिशियली डिजाइन कलेक्शन में जैसे हमने फोर्थ ईयर में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा प्रोडक्ट होगा, हम आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं डेली टाइम्स का, जहां पर आप डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि एक मीडियोकर सी चीज उस प्लेटफॉर्म पे जाए, राइट? एंड वी आर एमिंग एट मच मोर बिगर प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम नाउ ऑन। सो हम यूजुअली जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम स्टूडेंट्स को कराते हैं, जैसे ट्राउजर बनाना हो गया, उसका पैटर्न, उसकी कंस्ट्रक्शन, तो आप अपने घर से अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ले आए। जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली इस बार बोला था कि आपको अगर लेम एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने बोला था मंडे ट्यूसडे मार्केट्स लगते हैं, हर शहर में लगते हैं, जहां पर यू हैव दोज facilities where you can buy small fabric in very cheap places. Go and buy those places. Explore the city where you are working, explore the city where you are staying, and explore the city where you are studying, right? So हो ही नहीं सकता कि आपकी मार्केट ना हो जहां पर आपको चीप चीजें मिले। आपको एज ए डिजाइनर एनीवेज यू हैव टू एडवोकेट योरसेल्फ, यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि मुझे बाहर जाना है, मुझे चीजें देखनी है, मुझे चीजें सीखनी है, ठीक है? तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आप छोटी छोटी मार्केट से चीजें खरीदें। एंड देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बातू सर, जो हम यूजुअली एट एलपीयू में प्रमोट करते हैं, इज वर्क व्हाइल यू लर्न, earn while you learn, right? So बड़ा important point है जहां पर हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। हम एक पर्टिकुलर ब्रांड शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दिया है इनफैक्ट हमने एलपीयू के साथ, जहां पर हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि मौका देने जा रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हमारे लिए काम करें। तो वी विल try and arrange some funds for you, but आपको पहली बात तो आपको जज्बा दिखाना पड़ेगा। You should be eager to work, eager to learn. That is something that you need to plan yourself, plan your mind. And आजकल बासु सर very interesting thing कि हमारी जो students हैं, LPU के students, जो current student हैं, they are doing digital marketing for people, right? अगर आपका taste अच्छा है, आपकी communication skills अच्छी है, आप लोगों के जो आपके जो Instagram IDs हैं वो handle करिए, people are ready to pay, right? So do small little things. This is ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट मैं बात कर रहा था, यही आपको एक बेहतर बनाते हैं, आपको एक इंडस्ट्री से कनेक्ट देते हैं, ठीक है? सो अगर आप में जज्बा है, अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि हो कैसा होगा, तो कुछ होगा ही नहीं, राइट? सो यू हैव टू बी हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। देयर सो मेनी वेज टू अर्न मनी एंड सपोर्ट योरसेल्फ। वी एडवोकेट द फैक्ट दैट पीपल शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग, अपना खर्चा खुद निकालें। That is something very important. It makes you very rigorously and passionately self-independent. I hope I could answer your question. एक इतना क्लैरिटी मेरे को भी नहीं था, समझ में आ गया कि कितना खर्चा होता है and all, so that can give students some idea. Now about admission and about placement. Basically क्या है कि questions आ रहा है, एक दो बार इस पे भी आ रहा है YouTube में, कि जो placement है, LPU का जो fee structure है, this is lesser than NIFT right now. And placement का क्या रेशियो है, किस तरह का है? Is that better than NIFT or equal to NIFT and all? और
अभी हम लोग ओपनली बात कर सकते हैं कि इतना छुपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब निफ्ट के लिए टारगेट करते हैं, ऑब्वियसली दिमाग में होते हैं कि दे विल बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली। सो एलपीयू उसमें क्या स्टैंड ले रहा है और एलपीयू का प्लेसमेंट का क्या होता है, लोग पूछ रहे हैं। इज दैट बेटर देन निफ्ट या इक्वल टू निफ्ट या लेस देन निफ्ट, अगर मैं सीधा क्वेश्चन पूछूं? So before I give it to Rajesh sir, I'd like to add something very important here, that we have a very, very talented, very, very experienced person who is handling this department, which is Rajesh sir. You know, and I say it from all my heart that he is doing absolutely amazing work, and 40 years of experience. He's connected to almost all the industries that we have in fashion. Placement is becoming better. Students, before placement, I would rather say that skill of students are becoming better, so that the bigger companies are ready to take them in. They are sustaining themselves, right? So अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगा, निफ्ट भी आपको प्लेसमेंट नहीं दे सकता है. दे वोंट बी एबल टू गिव यू. अगर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे भी दिया आपको, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास स्किल नहीं है. मैं बहुत ही सीधी सीधी ये बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास, यू नो, यूजुअली आई हैंडल लॉट ऑफ क्वेरीज अबाउट एडमिशन. मैं सीधा यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स के, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में स्किल है, तो आपको कंपनी हायर करेगी और आपको सस्टेन करेगी. अगर आपको एज अ स्कूल हमने प्लेटफॉर्म दे दिया, आपकी हमने प्लेसमेंट लगवा दी, if you don't perform, they are going to throw you out, right? So but as a department, we work rigorously to get the better placement. We give a class which is called PEP classes in the initial stages, जहां पर हम आपको हम आपको तैयार करते हैं कि आपको इंटरव्यूज कैसे लेना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है. यहाँ पे मैं एज ए स्कूल बता रहा हूँ, जो इंटरनली प्लेसमेंट के लिए होता है वो रजिस्टर विल हाईलाइटेड, बट हम किस तरीके से तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ. हम अब जरूरी नहीं होता है कि हर स्टूडेंट के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, where they can go and face interview, right? So what we do is, and interview is obviously the first experience a buyer and a student have. Well, that interaction is very important. So we teach our student how to face an interview. We work on their communication skills the moment they enter at LPU. We teach them how to face questions. We teach them, we give them life situation where they need to deal with it. And by the end of 4th year, they are much better as a person to face the interview. Now, Rajesh sir is going to highlight, you know, a placement hoti kaise. Rajesh sir, over to you, please. Yes, thank you. तो जैसे पहले भी मैंने सब लोग से कहा है, जो प्लेसमेंट हमारे लिए एक चैलेंज नहीं है. प्लेसमेंट हम काफी प्लेसमेंट कर रहे हैं. हमारे 100 कंपनी से ज्यादा के साथ हमारे पूरा स्कूल जुड़ा हुआ है. हमारी एक सेंट्रल प्लेसमेंट टीम भी अलग काम करती है, जहाँ पे उन लोग रेगुलर ड्राइव्स क्रिएट करते हैं, जो जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हो उनके. प्लस हमारा अपना खुद का 45 साल का जो तजुर्बा है इंडस्ट्री में, इसमें काफी सारे हमारे प्रोटीजीज जो हैं आजकल टॉप लेवल में हैं, कंपनी ओनर्स हैं, और इसमें हमें वो चीज इजी हो जाता है जो हम उन पे रीच आउट करते हैं. फिरोज सर ने जैसा कहा, बहुत जरूरी है कि स्किल एंड कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए. बिकॉज एक प्रोडक्ट जब अच्छा से हम मर्चेंडाइज करते हैं, हम जब कुछ खरीदने जाते हैं, एक चॉकलेट का डिब्बा भी हम खरीदने जाते हैं, तो उसका पैकेजिंग जब अच्छा होता है, हम उसी को चूज कर लेते हैं. एक टोमेटो सॉस का बॉटल भी अगर वो अच्छा से दिखने में हो, तभी हम उसको खरीद लेते हैं. तो ये चीज हम बहुत जरूरी से हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर हमारी, और जो नया अभी करिकुलम में हम लोग इंडक्ट किए हैं इस चीज को, हम इस पे और भी इसमें जोर लगा के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो हम बच्चे लोग को स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, टॉक स्मार्ट, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट, ये बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए. और ये कोई भी इंडस्ट्री में जाइए, हम जब किसी बैंक में जाते हैं, एक बैंक मैनेजर टाई सूट पहन के क्यों बैठा रहता है? क्योंकि हमें एक, आप वहां पे पैसा रखते हैं, पब्लिक वहां पे पैसा रखते हैं, हमें उसको वो इम्पोर्टेंस, उसका सीट, उसका गद्दी का वो इम्पोर्टेंस देना. एक 5 स्टार होटल में जाते हैं तो उसमें क्यों इतना वेल ड्रेस्ड होते हैं, सब कुछ फ्रंट ऑफिस से लेके इवन बैक ऑफिस तक सब लोग फिट फाट रहते हैं. क्यों?
क्योंकि उनका एक पब्लिक सर्विस है, कस्टमर सर्विस जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए हर चीज के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये हम पढ़ाई एक साइड है जिसमें हम लोग थरली फैशन से लेके टेक्सटाइल से लेके हर तरीके के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं बच्चे लोग का, सो दैट वो सामने चल के प्रेजेंटेबल हो, कम्युनिकेट करें अच्छे से, बात कर सके अच्छे से, और इंटरव्यू से ना कोई घबराए। ये बहुत जरूरी है आज के दिन में, और यही हम स्पेशली सबको आज के दिन में हम ट्रेन कर रहे हैं इसमें। तो हमें दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम श्योर दैट most of our students now who go out to the industry, they are loved over there, they're doing extremely well. I'm sure when you come across a few of them, you will all realize that they are already proving themselves in the industry, and which is something very, very indeed very, very good. That means if a student is performing well in 4 years, they don't need to worry about placement at all if they are studying in LPU, in short. So we're not comparing with anyone, but LPU has a proper placement. And उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है कि 4 साल पढ़ने के पहले जो स्टडी डिग्री के लेके क्वेश्चन आया है यहाँ पे, एंड ऑल्सो किसी ने मास्टर डिग्री के बारे में पूछा है कि डिग्री किसी और कॉलेज में किया है तो उसका क्या ऑप्शन है। एंड और एक क्वेश्चन अभी आया है कि एलपीयू में भर्ती अभी चल रहा है कि नहीं। सो इसके बारे में, भर्ती के बारे में मनीष भी है बोल सकता है, एंड डिग्री और वो आप लोग गाइड कर बोल दो आई नो द आंसर, बट सर मैं बोलना चाहूंगा इस पे। यस, स्टिल एडमिशंस आर ओपन and the process is very, very simple in our university. You need to fill the form first. Once you're done with the application formalities, then you need to appear in the exam called LPU Nest, Lovely Professional University National Eligibility and Scholarship Test. Manish, can you open the video because it will go live and it will only name sir, I'll try. Okay. So there are certain very amazing points of LPU. जैसे कि अगर हम बात एडमिशन की कर रहे हैं, LPU नेस्ट की बात कर रहे हैं, पहली बात, अगर किसी बच्चे ने निफ्ट, एनआईडी या यूसीडी का एग्जाम दिया है एंड दे गाइस क्वालिफाइड, देन इन दैट केस हमारा LPU नेस्ट एग्जाम एग्जाम्प्ट हो जाता है. बट यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप इन दैट केस, देन आई सजेस्ट यू शुड अपीयर इन द LPU नेस्ट एग्जाम. हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं स्कॉलरशिप की, ऑन द बेसिस ऑफ निफ्ट स्कोर, ऑन द बेसिस निफ्ट रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ एनआईडी रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ यूसीडी रैंक. एंड अगर आप इस तीनों में भी क्वालिफाई नहीं होते, देन वी डू ऑफर स्कॉलरशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th स्कोर. एंड अगर उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप एलिजिबल नहीं है, स्टिल हमारे पास ऑप्शन है. एलपीयू क्या सबको स्कॉलरशिप देता ही है? मतलब बिना स्कॉलरशिप में कोई जाएगा नहीं? लाइक सर, दिस इज काइंड, इसे ये नहीं बोलेंगे कि स्कॉलरशिप सबको देते हैं, बट यस, we support students. We just wanted to promote design education in the country. अब अगर हम कंपेयर करते हैं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट इफ वी कंपेयर, जैसे निफ्ट की फीस आज की डेट में 16.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली है, बट अगर आप एलपीयू की बात करते हैं तो हमारी फीस 1,20,000 रुपीज पर सेमेस्टर है. दैट मीन्स 9,80,000 रुपीज फॉर द 4 years. एंड ऑन एन एवरेज बच्चे को अप्रोक्सीमेटली 28 to 30% स्कॉलरशिप मिल जाती है फॉर द कंप्लीट 4 years विद नो टर्म्स एंड कंडीशन. ऐसा नहीं है कि हमने आपको बोला कि भी आपको हमने स्कॉलरशिप दे दी पहले साल और दूसरे साल हम आपसे वापस ले लें, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है. अगर हमने आपको कमिट किया यस यू आर एलिजिबल फॉर 28% स्कॉलरशिप और मे बी 30% स्कॉलरशिप, तो वो आपकी कंप्लीट 4 years के लिए चलेगी. वी एक्सेप्ट फीस सेमेस्टर वाइज, तो ऐसा नहीं है कि आपको ईयरली पेमेंट करनी है. एंड देयर इज नो हिडन कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम योर फीस, एंड देयर इज 3,000 रुपीज पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस. That's it. Otherwise, there's no hidden cost. Because in the country, there are certain institutions जो कि GST चार्ज करते हैं, but as per UGC और इंडिया में एजुकेशन पे कोई टैक्स नहीं है. So we are a UGC approved university. तो वो एक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी. Degree is proper, fees is reasonable, and also they have scholarships, and you have to pay semester wise. So this is the all payment system. And Right. One more thing, हम लोग जब ये बात कर रहे हैं कि एलपीयू के एडमिशन प्रोसेस अभी चालू है, वो अभी को डिफाइन करना जरूरी है, बिकॉज इवेंचुअली दिस वीडियो विल बी ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्ग. तो अभी कब तक एलपीयू का चल रहा है फॉर 2022 के जो बैच अभी चल रहा है, 2022 के बैच के लिए.
ऑन एंड एलपीयू नेस्ट के लिए क्या प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा आप कर दो, बिकॉज जितने लोग अभी देख रहे हैं बाद में ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, सो दैट एक क्लैरिटी दे दो आप कब Sure. कैसे करके एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं एंड See, क्या as of now हमारे पास जो एक्सटेंशन है, हमारे पास लास्ट डेट टू अप्लाई 30th of June, और एलपीयू नेस्ट का प्रोसेस सिंपल है. अगर आप फॉर एग्जांपल निफ्ट में हम लोग 7,500 रैंक तक बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं. लेट्स से इफ यू स्कोर your rank is between 1 to 3,000, then you're entitled or you're eligible to get 48% scholarship on the complete fees for the 4 years. Okay. If your rank is 48%, yes. Earlier it was 50, but second phase is going on. Yes, ये जो स्कॉलरशिप है हमेशा कम होती जाएगी. जो आप 4 साल बोल रहे हो 9.5 लाख या 10 लाख मान के चलो, वो मोर और लेस 5 लाख के अराउंड पे आ जाएगा approximately. Yes. मतलब ये एक साल का पूरा 1 लाख लग रहा है, जो एक साल निफ्ट का 3 लाख लग रहा है. मैं एक बार बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Right. एंड यू हैव द गारंटी ऑफ प्लेसमेंट जो रजत जी बोल रहे हैं यहाँ पे. सो दैट इज अ वेरी मतलब विन विन सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स. Yeah, that's true. तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं लोग. और फैशन शो वगैरह यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है. एनीवे चलो मैं बीच में कट गया. मतलब 48 ठीक है. Now the second category, in which let's say if the rank is between 3,001 to 6,000, then student is eligible for 38% scholarship for the 4 years. And if the rank is between 6,001 to 7,500, then he or she is eligible for 28% scholarship. Similarly, अगर हम 12th की परसेंटेज की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे के स्कोर between 80 to 89.9% है, then they are eligible for 28% scholarship. If it is between 90 to 94.9, then they are eligible for 38% scholarship. And if it is 95 and above, then the scholarship is 48% for the complete 4 years. Okay. अगर मान लीजिए आपकी रैंक आ गई है, आपकी रैंक लाई करती है between 3,000 to 6,000 और आप एलिजिबल है 38% स्कॉलरशिप के लिए, पर आपको लगता है कि आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देके, क्योंकि आप उसके इसमें एलपीयू नेस्ट आपका exempted है, but yes still if you want to increase your scholarship, you can still apply for the LPU नेस्ट एग्जाम. Okay. और एलपीयू नेस्ट में मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने एक बार एग्जाम दिया और आप एलिजिबल हुए 38% स्कॉलरशिप के लिए या 28% स्कॉलरशिप के लिए, सो एलपीयू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड चांस भी देता है LPU नेस्ट एग्जाम देने का, so that you can improve your score. Okay. That's interesting. तो ठीक है. मैं इतना मतलब स्कॉलरशिप देने के लिए डेडिकेटेड कॉलेज नहीं देखा है कि लेके ही जाओ स्कॉलरशिप. Not for scholarship. Again, we want student to come up and डिजाइन में आए, ज्यादा बच्चे डिजाइन को ऑप्ट करें, क्योंकि आज की डेट में भी मतलब डिजाइन को समझाना मार्केट में स्पेशली टियर 2 सिटीज में बहुत मुश्किल है. आज भी आप किसी घर में जाते हो, बोलते हो सर भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है, फैशन, अच्छा दर्जी हो, तो एक माइंडसेट बना हुआ है जिसको उस मिथ को दूर करना है, बच्चों को बताना है यस देयर इज अ फ्यूचर इन डिजाइन, ये अपकमिंग मार्केट है, बहुत सारी चीजें इसमें करने को, बहुत एक्सप्लोर करने को है. सो ये कह सकते हैं एलपी का विजन है सर. यार आपके पीछे पूरा एलपीयू दिख रहा है, सो दैट इज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. इट इज अ ब्यूटीफुल कैंपस. द कैंपस इज इन 600 acres. It's one of the biggest and largest university in the country. Or we offer almost all the sports in the campus. You name the sports and we have it. You name the facility and we have it. We have hospital inside the campus. Gold we have मिला है. Yes sir. हाँ जी, everything sir. In fact, नीरज चोपड़ा सबने नाम सुना होगा, javelin से जो gold medal Olympics. He is the alumni of LPU. ओके तो एक बार मैं एलपीयू नेस्ट के बारे में आता हूं. तो निफ्ट का तो अभी भी चल रहा है, जो भी सिस्टम है, ठीक है. सो निफ्ट के सिस्टम अभी भी चल रहा है. अब सेकेंड 5th राउंड तक ये चीजें चलेगा. तो एलपीयू नेस्ट 30 तारीख तक बोल रहे हो, जून में खत्म हो जा रहा है मनीष. तो अभी अगर कोई निफ्ट के बेसिस पे भर्ती होना चाहता है, वो सीट बुक कर सकता है, या उसके बाद भी आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे, बिकॉज निफ्ट इज एक्सटेंडिंग. एंड एग्जाम ऑनलाइन होगा कि नहीं ये भी किसी ने पूछा है. तो वो थोड़ा सा एग्जाम डेट और एप्लीकेशन प्रोसेस ये थोड़ा सा क्लियर कर दो, जो भर्ती होना चाहेगा अभी. और सर्टनली सर चांसेस हैं बिल्कुल एक्सटेंड करने के. रीजन बीइंग हमें भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि निफ्ट की अगर काउंसलिंग आगे जाती है और सीबीएसई का रिजल्ट और डिले होता है, तो डेफिनेटली वी नीड टू एक्सटेंड द डेट्स फॉर द एडमिशन. और अगर जैसे कि आपने बोला कि निफ्ट की रैंकिंग की बेस पे यस बच्चे डायरेक्टली सीट बुक रिजर्व कर सकते हैं. They need to pay just 10,000 rupees to reserve the seat, and as per the policy,
let's say if they reserve the seat and 15 July तक अगर वो refund लेना चाहते हैं, in that case only 500 rupees will be deducted and the rest of the amount will be refunded. अरे ये कब से, ये किसी ने पूछा है अभी कि एलपीयू में 2022 के बैच स्टार्ट कब से होगा बीडेज फैशन का? सर अराउंड 15th of August. 15th अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जून एंड से जुलाई के अंदर ही जिसको भर्ती होना है, निफ्ट का भी जुलाई तक की ये क्लियर हो जाएगा। एंड एक क्वेश्चन और था कि स्टिल इफ समबडी लुक्स फॉर लोन, तो एलपीयू के वहां से एजुकेशन लोन में क्या सपोर्ट है और एनीथिंग, थोड़ा सा एजुकेशन लोन के बारे में? Definitely for education loan as such, university doesn't offer any kind of education loan. In that case, you need to get in touch with the their respective banks, and we provide all sort of documentation which is required for the education loan. That in that case we will help them. Okay, मतलब मिल जाता है आराम से? हाँ, बिल्कुल मिल जाता है सर। इनफैक्ट हम लोग बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि बिहार में क्रेडिट कार्ड स्कीम्स होती है स्टूडेंट्स के लिए, वहां पर भी हमारा नाम रजिस्टर्ड है। सो अगर किसी बच्चे को, बिहार का बच्चा स्पेसिफिकली है, तो वो अपने जिला अधिकारी से या अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलके वहां पर अपना अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन लोन ऑफर करती है बिहार गवर्नमेंट, उसमें कुछ रिबेट्स मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, चलिए, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो हम लोगों को इसके बारे में पता चल गया, एग्जाम के बारे में, प्रोसेस के बारे में एंड प्लेसमेंट के बारे में। जो जनरली क्वेश्चन मेरे पास पहले आए थे जो 1-2 दिन में, तो ये वी नो दैट। नाउ अप्लाई कैसे करें? बिट लिंक मिल जाएगा, एलपीयू के सारे जो भी वीडियोस है उसके नीचे भी है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो जब पब्लिक होगा इसके भी मैं डिस्क्रिप्शन में बिट लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा। अदर देन दैट, जो भी नंबर हम लोगों का है, नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ यहाँ पे, 9891837209। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से भी वी कैन शेयर द बिट लिंक। एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव अबाउट? सर आपने क्वेश्चन और पूछा था कि ग्रेजुएशन के बाद क्या ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी ने पूछा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन। In fact, we do offer all sort of courses in design field after graduation. So we have masters in, M design in fashion, M design in product design, M design in multimedia, M design in user experience. Interaction design. So we have all sort of courses, sir. Okay. आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए। एंड आई थिंक एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मटेरियल वी नीड टू ब्रिंग इन द क्लासेस फ्रॉम अगस्त। आई थिंक शी, नाम से शी लग रहा है, डेफिनेटली जॉइन एलपीयू एंड क्वाइट एक्साइटेड कि कब शुरू होगा। तो मटेरियल भी पूछ लिया है कि मटेरियल क्या लेके आए फॉर एवरी स्टूडेंट। आई थिंक सर फैकल्टी फिरोज इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिरोज, माइक ऑफ है जी। कैन यू हियर मी नाउ? या सो मटेरियल, बेसिक स्टेशनरी चाहिए होगी फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पेपर चाहिए होंगे। वी नीड फ्यू मटेरियल, जैसे कुछ आप एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास है तो प्लीज गेट दैट। कुछ यार्न वगैरह हैं, यू कैन ऊन वगैरह लेकर आ सकते हैं। जो भी क्रिएटिविटी के लिए आप मैं यूजुअली रेकमेंड करूंगा कि जो भी आप एनीथिंग दैट हैव स्कोप, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप वो लेकर आइए। बेसिकली आपको कलर्स चाहिए होंगे, स्टेडलेस कलर, वाटर कलर, पोस्टर कलर्स, यू नीड शीट्स, यू नीड बेसिक स्टेशनरी स्केल्स वगैरह, एंड देन यू नीड मैक्रोमे हम कराते हैं, पीओपी वगैरह कराते हैं, तो वो यहीं पर हमारे पास एक स्टेशनरी है, आप यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। बट अगर आप घर से लेकर आ रहे हैं तो स्टेशनरी इज व्हाट यू नीड, एंड व्हाट एवर फैब्रिक दैट यू कैन ले योर हैंड ऑन, जो भी आप ला सकते हैं तो आप जरूर से लेकर आए। एंड यूएक्स डिजाइन के लिए भी कोई पूछ रहा है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा बोल दो। यूएक्स डिजाइन एंड आई थिंक मनीष वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस। हाँ, so what exactly you want to know यूएक्स about डिजाइन के बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा, और अदर जो कोर्स है मनीष थोड़ा सा बोल दो। यूएक्स के बारे में पूछा है किसी ने अभी यहाँ पे। Okay, so yes sir, we do offer B design as well as M design in interaction design. Well, interaction design is what basically UX UI. So whatever applications we are using these days on a mobile phone is a part of UX UI. नहीं, मैं सॉरी, आई एम जस्ट मनीष यूएक्स डिजाइन के बारे में नहीं पूछ रहा है, एलपीयू का ऑफर ऑन यूएक्स डिजाइन जो पूछ रहे थे, इट्स नॉट अबाउट यूएक्स डिजाइन। एलपीयू के यूएक्स डिजाइन के ऊपर कौन से कोर्स है, क्या है, जो कोई कोर्स है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली। हाँ सर, बिल्कुल सर, हमारे पास प्रॉपर डिग्री है इसके लिए, दैट इज कॉल्ड बी डिजाइन इन इंटरेक्शन डिजाइन। ओके, Yeah, it's a 4-year degree program.
Similarly, we have M design in interaction design. In fact, let's say अगर कोई 4 साल का कोर्स नहीं करना चाहता, so we do have another nomenclature. We can say that BSc in interaction design. It's a 3-year program in that case. Okay, so we तो कितने कोर्स है फैशन डिजाइन के अलावा? यूएक्स डिजाइन है, इंटीरियर है, और So fashion design, then we have product and industrial design, then we have interior and furniture design, then we have animation design, we have graphics, we have multimedia, then gaming, and we have film production, and interaction design. So these are the courses that we offer. And LPU has masters for all these courses, all these department you are saying? Yes, almost. We have masters in all the segment. ठीक है. So masters के लिए कोई पूछ रहे हैं तो, but master के लिए जो पूछ रहे हैं कि इन सारे कोर्स के masters है, so कोई specific particular course पूछ रहे हैं तो अलग बात है. Otherwise, asking for masters, the LPU has masters for all these courses. Right. ठीक है. And एक क्वेश्चन और इधर आया है, the specific configuration laptop we need to bring FD student. लैपटॉप एलपीयू में तो फर्स्ट ईयर में इतनी रिक्वायरमेंट होगी नहीं मेरे ख्याल से, बिकॉज आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से स्टार्ट करोगे, जितना मुझे समझ आया. उसके बाद देख लेना लैपटॉप के ऊपर, स्पेशली फॉर फैशन. फिलहाल तो ड्राइंग वगैरह इंपॉर्टेंट है. So this is what, and interestingly, this is more than 1 hour. This was a social experiment sort of to bring college in this way to communicate with student. And 1 घंटा निकल गया हम लोगों का, and that's actually quite interesting. And मुझे लग रहा है कि और भी हम लोग लंबा बात कर सकते थे, but I know कि अभी सबको एक टाइम हो गया to go home and take rest after all the weekend, so I don't want to bother you all. अगर आप लोगों को personally कोई message देना है for students, please share those messages, then we can actually end today's session. Mr. Basu, there was a question from your side. You're talking about international platform that we're giving it to students. Yeah. So international platform is one of the biggest platform that LPU is giving it at present. यहाँ पे बच्चे को मौका मिलते हैं बाहर जाने का, फॉरेन जाने का, with full scholarships for a semester. It all depends on your performance. आपका portfolio, आपका overall performance, आपका CGPA 8 से above होना चाहिए, attendance 75% से above होना चाहिए हर subjects में. So definitely, if you perform really well, if you have got a will to go outside, if you would like to see the international platform, global industry देखना है, बाहर कैसे काम होता है, definitely have got a best chance to get a scholarship. But again, it depends on your performance and portfolio. Next is we also have a program 2+2, which is Fashion International, and there you get a chance to have your overall degree first 2 years at LPU and 3rd and 4th year at your chosen university that you get a list from our side. So you have got connections with the fashion capital, that is France. You can go to Paris, you can go to Italy, you can go to Australia, you can go to US. And there are so many other countries, because we are talking about just those countries which is specialized in art and design and fashion. Otherwise, we have got more than 200 MOUs with LPU where fashion and textile does happens, but we are giving you the best platform. So international platform is one of the biggest one that more than 100 students are going every semester from LPU across all disciplines. उसमें engineering है, उसमें design है, उसमें pharmaceutical है. There are so many. So definitely you get a chance, and I think as a fashion student, definitely you need to get exposed in that area also. क्योंकि fashion definitely is not something which is from India, but it's a global scenario. You have to understand the cross-culture, interdisciplinary approach कि Indian students fashion के बारे में कैसे सोचते हैं, और एक फ्रांस का स्टूडेंट जो पेरिस में बैठा है वो फैशन और डिजाइन के बारे में क्या सोच रहा है. तो जब आप जाते हो पेरिस या फ्रांस घूमने के लिए, इस तरीके से मौका अगर मिले आपको, तो definitely you get a chance to stay with them.
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री का बच्चों से आप रहते हो. You get a lot of chance. You get a chance to stay with more than 15 to 20 countries across the globe, where you stay together in the hostel, have good friends. अब एक साथ रहते हो, उनके कल्चर के बारे में जानते हो. Definitely, once you understand the culture, the way they think about design, that is very important. So how to think about design? आपका perspective, way of thinking, आपका way of seeing things is absolutely different from what they think. So definitely ये जो आपका cross culture connections हैं, interdisciplinary approach जिसको हम बोलते हैं, definitely you get a chance to stay with them and you can enjoy over there. And not just enjoy, because उनके faculties कैसे पढ़ाते हैं, उनका assignments कैसे होता है, उनका way of jury कैसे होता है, उनका presentations कैसे होता है. How much time they give for research, how much time they give for executions. जैसे अभी बात हो रहा था कि फैशन में कितना इन्वेस्टमेंट है. अगर आप फॉरेन में जाओगे तो फॉरेन में, फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू यूके और एनी कंट्रीज इन यूरोप, फैशन डिजाइन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम. और वहाँ पे बच्चे ये सारे जो मटेरियल्स है वो खुद को मैनेज करना पड़ता है. वो दुकान में जाके खरीदेगा तो उनके लिए काफी महंगा पड़ता है. इंडियन स्टूडेंट्स को काफी चीप पड़ता है, क्योंकि इंडिया इज मेंट फॉर ऑल रिसोर्सेज, इज अ रिसोर्स. आप अगर देखोगे, अगर यूके स्टूडेंट फैशन पढ़ रहा है लंदन स्कूल ऑफ फैशन में, उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई मैं दुकान में जाके फैब्रिक खरीदूंगी कि नहीं, क्योंकि फॉर देम इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. तो आपको ये देखना है कि वो बच्चे कैसे मैनेज करते हैं. सो ये सारे चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आता है once you start going there. And for every fashion design students, if you get a chance to go abroad, you should go, because that will open up your mind. Definitely, क्योंकि exposure ऐसा एक चीज है, it's one of the biggest guide. It's an experience that you have through your tour. तो 6 महीना बाहर रहते हो, कैसे जाना, कैसे लोगों के साथ डील करना, मार्केट कैसा है, कस्टमर्स कैसे हैं, उनके पसंद कैसा है, उनका रेगुलर ड्रेसिंग सेंस कैसा है. बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में, मतलब आपके हमेशा आपका पॉपअप होगा माइंड. एंड दीज आर नॉट टू बी टॉट इनसाइड द क्लासरूम. अगर मैं आपको समझा भी दूं, फिर प्रेजेंटेशंस दे भी दूं, एक्सपीरियंस ऐसा एक चीज है जो नहीं हो पाएगा क्लासरूम के अंदर, वो जाके ही होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इफ यू आर in any college across this globe, you should have a chance to go abroad, at least to the capital, fashion capitals, जिसको हम मिलान बोलते हैं, या पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो. You go there, understand, and see how the fashion is all about. The more you travel, the more you experience, the more you gain knowledge, and the more good designers you become. Designing paper में और करने से नहीं होगा. It is just one part of it. But the more you get exposed to this kind of markets, dealing with clients, आप लोगों का भी तो रुचि देखो ना कि उनका टेस्ट क्या है. अफ्रीकन्स का टेस्ट अलग है, रशियन का टेस्ट अलग है, यूरोपियंस का टेस्ट एब्सोल्युटली डिफरेंट. एंड व्हेन यू गो टू अमेरिका, देयर टेस्ट इज डिफरेंट. उनका कलर ऑप्शंस डिफरेंट है, उनका वे ऑफ लिविंग स्टाइल इज डिफरेंट. सो फैशन इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल. सो फैशन इज नॉट जस्ट अबाउट गारमेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू टेक फैशन द वे इट शुड बी. And I think LPU is one of the best platform where we are sending our students for full scholarships. And there's one of the best program that is 2+2 with a very economical price. With a 2+2 को हम लोग थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर देते हैं. 2 साल LPU में पढ़ेगा, 2 साल the student will go to abroad. वो खुद को, वो उनके पास लिस्ट होते हैं, वो खुद चूज कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री में जाकर रहना है. Okay. अगर यूके में जाएगा तो वो पाउंड होगा, 100 रुपए. उनका 1 रुपया मतलब यहाँ पे 100 रुपए. If you send them to Australia, it is 50 to 55. If you send them to Europe, it is almost about 88 to 90. So इस तरीके से आपको करेंसी भी देखना है, कितना आपके लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा आपके लिए रीजनेबल हो रहा है, इकोनॉमिकल हो रहा है. एंड डेफिनेटली ऑल्सो गेट अ चांस ओवर देयर. जैसे अभी बात हो रहा था, फिरोज सर बोल रहे थे कि you get a chance to earn while you learn at LPU. So ये मॉडल बाहर भी है. You can work for 20 hours in a week. Okay. And from there, per hour you can earn. It depends on the country, but at least not less than $5 to $10. It depends on what kind of work you're doing it.
ये इस तरीके से अगर पार्ट टाइम काम करते हो बाहर तो वो मैंडेट है, बिकॉज वो क्या होता है बच्चे पॉकेट मनी अर्न करते हैं, दे आप जैसे बोल रहे थे मटेरियल का कॉस्ट कहाँ से आएगा या पॉकेट मनी कैसे आएंगे, सो दे अर्न अ quite reasonable amount of money when they are outside and they can manage very well, because सिर्फ ये बच्चे नहीं है, और भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज, एशियन कंट्रीज से काफी सारे बच्चे जाते हैं इस तरीके से फैशन डिजाइन को पढ़ने के लिए। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड अभी 2-3 क्वेश्चंस लास्ट है जिनको लेके मैं इसको करूंगा बंद। एक तो है कि 2 का आंसर मेरे को ही पता है कि एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो रिटन है या सिचुएशन टेस्ट लाइक है, उस तरह का नेस्ट के एग्जाम के बारे में पूछा है। क्वेश्चन बोल देता हूँ, ओनली द रिटन एग्जाम, मतलब वही कि एग्जाम जो एलपीयू नेस्ट बोला जा रहा है इसका क्या प्रोसेस है, वो क्या जैसे निफ्ट में होता है उस तरह का है कि सिचुएशन टेस्ट वगैरह, या ओनली रिटन एग्जाम है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में पूछा है। और एक क्वेश्चन है, निफ्ट के रैंक के बेस पर एलपीयू में जा सकते हैं क्या मास्टर में? हाँ, डिग्री की बात हम लोग कर रहे हैं, बट मास्टर पे भी हम लोग ऐसे जा सकते हैं कि नहीं, ये भी लोगों ने पूछा है। तो मनीष थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डाल दीजिए। Definitely, sir. On the basis of NIFT, SEED, and NID, इनके scores and ranks के basis पे आप बिल्कुल मास्टर्स में भी आ सकते हैं। अगर आपने मास्टर एम डिजाइन के लिए निफ्ट में अप्लाई किया और आपकी वहाँ कुछ रैंकिंग है या स्कोर है आपके पास, उसके बेसिस पे भी आप एलपीयू ज्वाइन कर सकते हैं डिजाइन कोर्सेज, और उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। ओके, सो ये तो आंसर सॉल्व हो गया। एंड एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा आप बता दीजिए। So, sir, our exam is an online exam. It's a proctored exam, and इसमें से 2 तरह का कैटेगरी होती है, गैट एंड कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें कि बच्चे को ड्राइंग बनानी होती है, बाकी हमारे नॉर्मली आपके पास ऑप्शनल होंगे, मतलब इट्स अ वेरी बेसिक जनरल नॉलेज, वी कैन से दैट। ओके, एंड ये ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ होता है ना? नो नो, इट्स ओनली ऑनलाइन। बहुत खतरनाक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। फॉर स्कॉलरशिप विल हेल्प यू कंसीडर कैटेगरी रैंक और कॉमन मेरिट रैंक? कॉमन मेरिट रैंक। निफ्ट के कैटेगरी और कॉमन मेरिट रैंक नहीं, ये लोग सपने में भी देखेंगे कि कैटेगरी रैंक मिल रहा है, कॉमन मेरिट रैंक। ठीक है, तो स्कॉलरशिप कॉमन मेरिट रैंक है, तो इसके लिए एक्चुअली ऑप्शन वाइड ओपन हो गया है जो भी जाना चाहते हैं, ठीक है। सो एंड दैट्स इट, अभी तक यही क्वेश्चन थे हर जगह पे। आई जस्ट वांट टू थैंक्स अ लॉट टू एलपीयू एंड आप लोगों को जो आप लोग सामने आए इस तरह का एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिजाइन एजुकेशन, कि ये जस्ट एक शौक नहीं है, इट्स एन एडुकेशन। ये समझाने में बहुत मुश्किल होता है कि इसका एक पूरा प्रोसेस है, एंड यू कैन गो टिल पीएचडी, एंड जस्ट टेलर बनना भी नहीं है फैशन का मतलब। एंड ऑल्सो it's more than 1 hour 15 minutes we are talking, and it's I don't know what to say basically. Thanks a lot for this opportunity, and इस तरह का कुछ चीजें होंगे तो हम लोग आगे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर इसके बाद इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो। so I will forward those questions to the authority. Thank you, Sunandu sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.